So my dear students, we are going to discuss question number 3 here. So far we have discussed about the magnetic field patterns for a straight conductor. That was our first question. Second question, we discussed about a circular loop. Okay, we discussed how magnetic field arises in a circular loop, how magnetic field is developed in a circular loop. Okay, beta. Now our third question is, what is the magnetic field due to a current in a solenoid? So I'm going to write here the topic's name, magnetic field due to a current in a solenoid. Okay, I'm going to write here magnetic field due to a current in a solenoid. Okay, beta. So this is question number third, as was discussed in the previous lectures, that we are going to discuss the magnetic field patterns for three cases. One was for the straight conductor, second for the circular loop, and third for a solenoid case. Okay, beta, we are up to question number third now. First of all, we will be understanding what solenoid is actually. What solenoid is? Simple solenoid होता क्या है बेटा? Solenoid छु गोबर आसान वुसा अगर बस straight conductor निम्न suppose में छु wire आक simple आक wire छु ठीक है ये भी wire करना change if I will change the arrangement of wire in such a way कि इसका जो arrangement होगा I will be wounding it मतलब करेंगे wound in the form of helix helix क्या हो अगर भी ये straight conductor straight wire एक राउंड शेप मज बनावन कि यथ पे बनावन अद बनाव सर्कुलर सेक्शन यथ कॉइल छ वनान तो आया समझ कि यथ पे ठीक है गुबरा गो अगर बह यह स्ट्रेट कंडक्टर यह स्ट्रेट वायर अकिस अरेंजमेंटस मज बनावन कत अरेंजमेंटस in the form of helix, in the form of spring, इत पे स्प्रिंगस मच ना तिम आसान सो वाउंड करित आमु सो वायर, that is simply called as solenoid. Have you got this beta? So I'm structure छ आसान कित पे अगर तो फेस ऑनस मज वुचु if you look at its cross section of its side views at यम circular sections बनाने कित पे है circular sections तो शो गुबर समझ यवन okay so this type of arrangement is called as solenoid. This is called as solenoid. So what is solenoid? So I'll write the definition here. It's an arrangement wherein wire is wound in the form of helix. Simple. Helix क्या is going helix in the form of circular rings. Okay, circular coils. ठीक है? So solenoid, it's an arrangement. It is an arrangement wherein wire is wound in the form of helix और दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है it is a coil of many turns closely wound in the shape of a tight spring. Okay beta, so what is actually solenoid? Solenoid is an arrangement wherein wire is wound in the form of helix और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है इट्स ए कॉइल ऑफ मनी टर्न्स एक कॉइल होगी जिसमें आप टर्न्स दोगे क्लोजली wound in the shape of a tight spring जिस जैसे कि आपका स्प्रिंग होता है जिसमें आपकी वो कॉइल आप एज्यूम करो जिस तरह का स्ट्रक्चर स्प्रिंग में होता है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज सॉलिनॉइड अगर आपका स्प्रिंग जो होगा इन द फॉर्म ऑफ ए वायर अगर उसमें जो मटेरियल होगा दैट विल बी द कंडक्टर if the wire is like in the form of a tight spring that simply becomes a solenoid. Just a simple solenoid a straight wire निमो तद बनाओ coils सब बनो क्या solenoid. Our question is, what is the magnetic field around that solenoid? The punch magnetic field produced करानी solenoid, what is the pattern for that magnetic field? वो magnetic field जो है वो कैसे produce करता है, कौन produce करता है?
solenoid जो produce करेगा magnetic field, what is the pattern for the magnetic field that is this developed inside a solenoid. I'll repeat what is solenoid. Actually, it's an arrangement wherein wire is wound in the form of helix, or it's a coil of many turns closely wound in the shape of tight spring. Okay, so let's talk about the magnetic field that is developed around a solenoid, that's developed in a solenoid. So उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सोलेनॉइड को हमने सिंपली यस अप्लाई करनी है, यस पोटेंशियल डिफरेंस. वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप करेगा, with the help of a battery when it's connected with the outer source, that is the battery. Okay, so let us suppose कि ये solenoid आख बना solenoids, ठीक है गुब्रा. so this is like solenoid जिसके दो ends होंगे. One of the end is connected with the positive terminal of a battery and another end is connected with the negative terminal of the battery. ठीक है गुब्रा. Let us connect this end with the positive terminal of the battery and this end with the negative terminal of the battery, जिसकी वजह से potential difference create होगा about the two ends. Okay, and just as a result of it, this current is going to flow. Okay, so I have to study out what is the pattern of magnetic field that is produced inside a solenoid. ठीक है. Okay, what is the direction of electric current? Electric current की direction है from the conventional current concept from the positive to negative. याद थे जो को उससे इशू positive ये और ये इस पर मान तो या वो समझ ऐसे आके देखो यहाँ से आके ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, and is in this direction. Are you getting me? In this direction. So likewise, positive to negative. Are you getting me? This is the direction of what? This is the direction of electric current. From the positive to negative. Positive से आके ऐसे करके ऐसे. This is the direction in the downward direction. यहाँ से upward direction आएगा. याद थे जो. This is like this. This will be like this. This will be like this. यहाँ से this will be like this. This will be like this. Okay, this is the direction of electric current. ओके यहाँ से देखो आप, अब यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा. होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड व्हेन positive terminal. Let us suppose this is the end A and this is the end B. Okay, so our question is, first of all you have to, आपने जो डायरेक्शन देनी है वो अपने राइट डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना है. दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज वर्थ टू बी नोटेड कि ये जो आपका डायरेक्शन होगा करंट का, दैट शुड बी इन ए करेक्ट मैनर. ओके, अगर आपका डायरेक्शन चेंज हुआ तो यू विल बी फाइंडिंग डिफिकल्टी इन सेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर आपको कंफ्यूजन भी होगा. दैट्स वाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये आप क्लियर कर दो, फर्स्ट पॉइंट ये आप क्लियर करो कि डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी इन ए करेक्ट मैनर. ओके, लाइक दिस, पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे आगे. ठीक है गोबर. सो लेट अस सपोज दिस इज द एंड ए एंड दिस इज द एंड बी ऑफ ए सोलेनॉइड. And what's the next is we have to just draw the pattern of magnetic field around the solenoid. Okay, make sure this the magnetic field of lines जो होते हैं, magnetic lines of force जो होते हैं inside a solenoid, they are similar. They are similar. The magnetic field produced by a solenoid is similar, the word is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. Very good. अमिक मतलब गो युथ पे बार मैग्नेटस मज मैग्नेटिक फील्ड गसान प्रोड्यूस, इत पे बार मैग्नेटस मज मैग्नेटिक फील्ड गसान क्रिएट, सिमिलर वैसे का ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन सोलेनॉइड. ओके, मतलब लेट्स टॉक अबाउट द बार मैग्नेट फर्स्ट. बार मैग्नेट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है.
लेट अस सपोज दिस इज बार मैग्नेट अगर तुम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एस पर्मित तथ मज बार मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट दितमुत मे बार मैग्नेट क्या गो इट्स इन द फॉर्म ऑफ एक रेक्टेंगुलर एक शीट जैसे होता है जिसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी ये है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी ये है कि नॉर्थ पोल से ये इमर्ज होते हैं सोर्स इनका नॉर्थ पोल दैट मीन्स दे गेट started from the North Pole and yes they get merged to the South Pole. Okay, that means ये नॉर्थ पोल से निकल के ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पहुंचती है साउथ पोल में they emerge from the North Pole and merge yes in the South Pole but outside the magnet like this. Okay, और इन्हें इंटरसेक्ट नहीं करते आपको पता है क्यों नहीं करते हैं यस क्यों नहीं करते हैं बिकॉज एट दैट पॉइंट दे शो द डायरेक्शन वो इनकी डायरेक्शन होती है इनकी एक ही डायरेक्शन होती है बट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम वहाँ पे कंपास रखेंगे तो कंपास में वहाँ पे क्या होगा कंपास ये मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन शो करेगा इधर इन द लाइक दिस अगर मैग्नेटिक फील्ड शीत पॉइंट ब्याक शीत पॉइंट हाँ एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही भी है और ये भी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है दैट्स वाई एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम डिपेक्ट नहीं कर सकते हैं दैट्स वाई दे डोंट इंटरसेक्ट ओके सो सेम वे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज इनटू द साउथ पोल ओके same like this is the pattern of the magnetic field lines around the bar magnet okay ठीक है and inside the bar but it's the direction of magnetic field inside what inside this bar magnet is they are parallel to each other ठीक है directed from the south to north okay and directed from the north to south outside the magnet this is the pattern of magnetic field lines around what around yes around a bar magnet का ये डायरेक्शन ये पैटर्न होता है किसका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड अ मैग्नेटिक सो व्हाट I wrote magnetic field that is produced by a solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet ये आपको लिखना भी है बार मैग्नेट का मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाया यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस ऑन योर पेपर इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन सिंपली मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने बताया कैसे प्रोड्यूस होता है सो बट टॉकिंग अबाउट द सोलेनॉइड यहाँ पे हमने पहले पोल्स डिपेक्ट करने हैं यहाँ पे हमें पता था कि दिस इज द नॉर्थ पोल दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल नॉर्थ पोल से निकल के ये साउथ पोल पे मर्ज होते हैं यहाँ पे हमें नहीं पता है कि नॉर्थ पोल क्या है और साउथ पोल क्या है उसके लिए उन पोल्स को डिपेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है आप इफ़ यू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर था अबाउट ए सर्कुलर लूप उसमें हमने पोल्स के रिलेटेड एक रूल पढ़ा था दैट वाज कॉल्ड एज क्लॉक रूल ओके उसको हम क्लॉक फेस रूल भी कहते हैं ठीक है सो उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया रादर कि अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी अगर करंट की डायरेक्शन साउथ पोल होगी अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट एंड बिकम्स ए साउथ पोल ओके सो अगर हम स्टडी करेंगे the direction of current is in the clockwise direction this is the clockwise direction and उसमें जो हमारा ये S जो बनता है that depicts the face is becoming the south pole और अगर हम direction of the current जो होगी that is going to be the north this anti-clockwise direction that face becomes as north pole but here we don't know what is the pole that is at end A and what is the pole that is at end B ओके उस चीज़ को हमने स्टडी करना है बाय टेकिंग द रूल बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ ए क्लॉक फेस रूल और क्लॉक रूल सिंपली ओके अब हमने दूसरा पॉइंट ये है फर्स्ट पॉइंट जो हमने रिमेंबर करना है जो हमने नोट आउट करना है दैट इज द टू ड्रॉ द करेक्ट मैनर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नंबर सेकेंड टू स्टडी द पैटर्न ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट at both ends pattern in the form कि A एंड पे हमारा जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है क्या वो क्लॉक रोल में क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है वो हमने स्टडी आउट करा दूसरा पॉइंट ये भी है एट दोनों एंड्स पे ए एंड पे भी हमने स्टडी आउट करना है बी एंड पे भी स्टडी आउट करना है वो कित पट करो इस ना दिस इज लाइक ए हेलिक्स टाइप
ठीक है बह कर बह ब्रो साइड वेज अगर मैं इसको अगर स्प्रिंग वुचन ना स्प्रिंग कित पे स्प्रिंग ऐसे होता है ना स्प्रिंग कित पे स्प्रिंगस वुच बह कित पे फ्रंट साइड बह फ्रंट साइड अमिच डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रंट साइड डायरेक्शन क्या वुच सा अगर बह इथ पे वुचन लुकिंग एट द फेस ऑफ इट लुकिंग एट द यिथ पे कह looking at the face of it like this face of it फेस ऑफ इट वहां से हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में है मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज वुच सा गोबर ये बह फ्रंट वेज ये वुचना बह वुच कि करंट में पकान कि दैट मीन्स करंट में ये पकान सो इट इज क्लॉकवाइज ना ये क्लॉकवाइज सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से क्लॉकवाइज करंट चल रहा है ओके वुच सा वन गोबर वन मे ये वुचन ये वन सा वन ये वुचक ये कत पे बोजन वुच सा यह फ्रंट एंडुक वुचन फ्रंट एंडुक वुचन करंट कत पकान करंट मे पकान ये तय आवा समझ ये ओके दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ वुच सा यह फ्रंट फेस यह फ्रंट फेस ये फ्रंट फेस वुचान सोद फ्रंटस मज प्रॉब्लम गसान क्या दिस इज द क्लॉकवाइज ये फ्रंटस अगर वे वुच करंट पकान ये करंट में पकान ये सो दिस इज क्लॉकवाइज ये ये वुच करंट में उल्ट पकान कि ये आपको साइड ऐसे नहीं देखना आपको अपने फ्रंट में देखना है फ्रंट में जब फ्रंट फेस दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स फेस लुकिंग एट द फेस ऑफ एंड बी we depict that current is flowing in the anti-clockwise direction. So here is anti-clockwise direction of current. Anti-clockwise. Once a clock rule किश में वना अगर current शी चा clockwise बना clockwise अगर current शी पकन clockwise क्या है clockwise शी कित पॉइंट face कुछ पॉइंट face is south pole go and A becomes a south pole ठीक है अगर वुच ये करंट पकान एंटी क्लॉकवाइज कुछ फेस बनान सो दिस एंड बिकम्स एस नॉर्थ पोल दिस एंड बिकम्स एस नॉर्थ पोल समझ गोबर गो अमुक मतलब गो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव वुचान दिस एंड बिकम्स एस साउथ पोल एंड दिस एंड बिकम्स एस नॉर्थ पोल बनो ना वो सिमिलर टू द बार मैग्नेट ये बार मैग्नेटस मज नॉर्थ पोल साउथ पोल गो मे कर डिपिक्ट टू पोल्स हियर साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल मगर कत पे व्हेन आई स्टडी द डायरेक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक वह कर बह ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ अनदर फिगर ठीक है मैं बनाऊँ ये अनदर फिगर ओके आप ये नोट डाउन कीजिए वुच सा गोबर कि यह बनावन बह वनकस थो बात वन पैटर्न ऑफ बैटरी कह आई हैव टू स्टडी आउट व्हाट इट्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है वुच सा गोबर वन बह बनावन कित पे सो दिस इज आवर सोलेनॉइड this is our solenoid याद थे जो this is our solenoid okay so this rule becomes here this end becomes as south pole and this end becomes as north pole okay got it this end becomes as south pole kaise when I connected this end with the positive terminal of the battery here it's the positive terminal of the battery and here is the negative terminal of the battery ठीक है जैसे हमने ये स्टडी करा है this is the positive end this is the negative end and as per the clock rule we depict this end becomes as the south pole and this end becomes as north pole have you got this so when this is south pole and when this is north pole मैंने पहले आपको अंडरस्टैंड करवाया पहले आपको मैंने स्टेटमेंट दिया कि दिस clock rule states that this magnetic field around a solenoid is similar to the magnetic field around a bar magnet so साउथ पोल में क्या होता है साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एंटर करते हैं एंड जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेटिक फील्ड लीव आउट करते हैं दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज इनटू द साउथ पोल व्हाट विल बी द पैटर्न here the magnetic field will be like this here the magnetic field are going to be like this okay these are the pattern of magnetic field lines just remember this is north pole and they're going to merge into the south pole okay मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं नॉर्थ पोल से एंड मर्ज आउट कहाँ पे हो रहे हैं साउथ पोल में दैट्स व्हाई आई रोट दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट अगेन दिस इज emerging out from the north pole and merging into the south pole okay this is the direction of magnetic field around a solenoid here again I'll be drawing like this
ठीक है गोबर एक ऐसे from the north pole to the south pole, from the north pole to the south pole, remember, from the north pole here the magnetic field are from the north pole and merging out to the south pole, but inside the magnetic fields, the magnetic field are parallel to each other. So they are going to be parallel to each other, they don't intersect at all. They're going to be parallel to each other inside the what, inside the solenoid. So directed from the north to the south, here the direction will be like this, यहाँ से निकल रहे, यहाँ से merge out हो रहे हैं. Okay, south pole से देखो here, this is the direction of here, sorry, this is the direction from the south to north inside the this bar magnet or inside the solenoid now, and outside the solenoid the direction of the magnetic field lines will be from the north pole to the south pole. But आपने कैसे डिपेक्ट आउट किया है कि नॉर्थ पोल बिहेव कर रहे हैं, साउथ पोल बिहेव कर रहे हैं? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक रूल. From the concept of clock rule, you have depicted this pole, and this end becomes as north pole and this end becomes as south pole. Okay beta, and this is the यहाँ पे मैं they are going to be merged towards the south pole and they are going to be emerged out in the form of like this, in the form of like this, जैसे कि आपका magnetic field produce होता है similar to the bar magnet, and this is how magnetic field lines are produced inside a bar magnet. Okay.